हाय गाइस, सो आज मैं अपना शू क्लोजेट क्लीन कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी शूज़ होते हैं हमारे पास जो हम नहीं पहनते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज कुछ क्रिएटिव और फन करते हैं एंड व्हाई डोंट वी रिवैम्प आवर ओल्ड शूज़ इनटू न्यू वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So for this DIY, you can choose any shoes you like. I'm using denim shoes here. Since spray paints leave a stain, make sure आप जब भी spray paints use करते हैं, आप घर के बाहर ही करें. I'm gonna start off with purple color. And once it's done, I'm using blue color to create a galaxy effect. अगर आपके पास स्प्रे पेंट्स नहीं हैं, तो आप एक्रेलिक पेंट्स भी यूज कर सकते हैं। So once you are satisfied with the way your shoes look, just leave it outside for a couple of hours. शूज ड्राई होने के बाद अब बारी है उस पे ब्लैक कलर लगाने की। इसके लिए आप स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। Also make sure that you blend it properly, ताकि कोई भी पैचेस ना दिखे। ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद अब बारी है एक स्प्रे इफेक्ट क्रिएट करने की। इसके लिए वी नीड व्हाइट पेंट एंड अ टूथब्रश। आप नॉर्मल पेंट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। So once you're done with it, just let it dry for a couple of hours. Lastly, put on some shoelaces. I'm also coloring the sides with black paint. So this is how the shoes turned out to be. I absolutely love how quirky it looks and I just can't wait to wear it outside. You know what? I'm gonna wear it outside right now to get some groceries. So I'll see you next time. Bye.